impactful Happy Minds, a weekly shot which we all have been getting, which we all have been receiving for years, and I have been also receiving from your side this weekly showering of love by your presence every week. And all of you have joined in on YouTube. Welcome to Happy Minds number 1154. Look forward to a wonderful Happy Minds today, like always. आज का भी subject बड़ा प्यारा है, but before that, a few success stories, a few insights from my side, and I want a few of you also to share your success stories. I will have your mic on if you want to share. Would love to hear आपकी life में क्या-क्या हो रहा है, right? Namaste everybody, those who have joined in. All of you, I have not taken your names, but Rajinder, Jyoti, Iskara. Iskara is a nice name. Iskara. That's a unique name. Priyesh, Santosh, Bharat, Namdev, everybody, Neela. Good to see all of you. Good to see all of you. And love you for sharing Happy Minds with your friends and family members. We have people every week. We have people joining in from some other city, some new place. Sometimes I have not heard of the towns where people join from. तो आप सबका स्वागत है. And आप लोग ही इस Happy Minds को और powerful बनाते हो. Love you, Naresh, Uday, Sagar. Great, Anjali. Wonderful to see all. Anuja and Sonali. Great. Lovely to see all of you. चलिए आज का Happy Minds शुरू करते हैं. So those of you joined me for the first time, maybe you can just type in first and the city you're from. So मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आज कौन-कौन नए लोग आए हैं. So if you joined for the first time or if you have not mentioned me earlier which city you belong to, तो फिर आपसे मैं जरा कनेक्ट कर पाता हूँ कि आप लोग कौन से शहर से हैं, कहाँ से हैं, you know, and it's great to know your participants. Iskara is first time. That's why I was wondering कि ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है. First time from Pune. Welcome Iskara. Great. Namaste Koja, Rahul, Sarika, Sagar. Lovely to see all of you this very morning. चलिए. So what we do is all those who have joined in for the first time and those who are watching me on YouTube, हम लोग क्या करते हैं Happy Minds में, like everybody knows, जो लोग मेरे साथ बहुत सालों से हैं वो तो पक गए हैं सुन के, because that's how I start, but it's important that I align everybody to what Happy Minds is every time they join in. So हम लोग शुरू करते हैं with meditation, with a bhajan, with some connect to Mahadev, to Krishna, to Almighty, to Lord, in whatever form you see God. And I always feel that we are blessed that we can see God in so many forms, in so many ways. In fact, we have a right, we have a freedom to see God in any way we want. Isn't it amazing? कभी तुमने सोचा इस बारे में that we have a choice. We have a choice to decide how we want to see God as. We have a choice to decide in what we want to see God in. So there is no fixed form, there is no fixed way to see God. सबको आजादी है. And it is such a wonderful thing that we have been blessed with this in our culture. तो किसी को ठाकुर जी में भगवान दिखते हैं, किसी को महादेव में दिखते हैं, किसी को गणपति जी में दिखते हैं, किसी को लक्ष्मी जी में दिखते हैं, किसी को सरस्वती जी में दिखते हैं. So we have किसी को पेड़ों में दिखते हैं, किसी को जानवरों में दिखते हैं भगवान, किसी को पत्थरों में दिखते हैं, किसी को हवा में दिखते हैं, किसी को अग्नि में दिखते हैं, किसी को वायु में दिखते हैं, किसी को पानी में दिखते हैं भगवान. So you decide in which you want to see God, but seeing God, connecting with God is a must. So that's what we start with every morning. And thoda sa mera objective bhi rehta hai ki can we connect back to our culture as much as possible in this fast-paced life of ours. We are, chasing our goals, our objectives. भागम भागी चालू है. जिंदगी तो चल ही रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है. So in this running around and chasing whatever objectives we have set in life, जो जरूरी है वो भी करना जरूरी है, बट उसके साथ साथ अपनी जड़ों को भी पकड़ के रखना भी जरूरी है. क्योंकि जितने फल आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, जितने ब्रांचेस आप चाहते हो कि आपके पेड़ में आए, जितना स्ट्रॉन्ग आप होना चाहते हो, उतना ही जरूरी है कि आप अपने जड़ों को मजबूत रखें. तो कोई भी पेड़ जो है जो लंबा हो जाता है और उसमें फल ज्यादा आते हैं, लेकिन उसकी जड़ें अगर मजबूत नहीं होती तो वो गिर जाता है. सो हमें भागना है, हमें बनना है, हमें कुछ पाना है, हमें बिजनेस करना है, हमें पैसा कमाना है, हमने अपना नाम कमाना है, वो जरूरी है. लेकिन उसके साथ साथ हमारे संस्कार, हमारा कल्चर
जो हमारा बैकग्राउंड है उसको भी पकड़ के रखना है. If we can teach this to our children and if we can instill this in the minds of our children, I think then we need not worry about anything. अगर उनके संस्कार अच्छे हैं, उनकी फुटिंग अच्छी है, फाउंडेशन अच्छी है, तो फिर बिल्डिंग तो अच्छी बनी जाएगी यार. हाँ, बिल्डिंग अच्छी बनाने के चक्कर में अगर फाउंडेशन को आपने मिस कर दिया तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? एंड एवरी सेंसिबल construction person, every sensible engineer from the construction field knows this, that the taller the building we want, the more deeper the foundation has to be. तो जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी, जितने नीचे की फाउंडेशन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी ऊंची बिल्डिंग उसमें बन सकती है. एंड सेम गोज फॉर लाइफ, एंड सेम गोज फॉर बिजनेस, सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स. Everywhere this concept remains the same. The deeper the foundation, the stronger the building on that foundation can be made. So we are blessed. Let us be thankful to our ancestors जिन्होंने हमें संस्कारों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है. अब ये हमारी ही गलती होगी कि हम उस फाउंडेशन को, उन संस्कारों को भूल जाएं और उनको पकड़ के ना रखें. तो उन्होंने तो अपना उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, फर्ज निभाया. हमारी जिम्मेदारी है कि we hold on to it and we pass it on to our future generations. So that's the thought behind starting the Happy Minds on a note of meditation and bhajan and connecting with God. So I mean, this is another subject which I can go on for another hour or so. So this is the first thing which we do. Second is, what we do is we have a round of success story sharing, and we share whatever success stories come my way. मैं उनकी sharing करता हूँ. उसका भी एक बड़ा कारण है कि share करने का. That somewhere when we listen to the stories of people who are around us, who are like us, जो हमारे जैसे हैं, those who are not the Ambanis of our life, they're not the Sachin Tendulkars and the Kohlis and the Dhonis of our life. They are ordinary people like you and me. तो जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं जो ordinary हैं और लेकिन अच्छा कर रहे हैं, चाहे किसी भी एरिया में अच्छा कर रहे हैं, we get a kick, we get a dose of inspiration, we get a push to do something well in our lives, right? So सामान्य लोग जब अच्छा करते हैं तो बाकी और सामान्य लोग भी अच्छा करने के लायक बनते हैं. That is so very important for you to realize that we hear the stories, we read the stories of the big guys. तो वो अच्छा लगता है पढ़ के, इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन हिट नहीं करते. हिट क्या करता है? जब आपका एक दोस्त जो आपके साथ रह रहा है, जिससे आप रोज बात कर रहे हो, वो कुछ अच्छा कर जाता है. हिट क्या करता है? जब आपके परिवार में कोई इंसान है जो अपना वजन कम कर लेता है, वो हिट करता है हो जाता है. हिट क्या करता है? जब आपके ऑफिस में आपका ही कलीग जो है वो कहीं पर और अच्छा कुछ काम कर लेता है. दैट्स व्हाट हिट्स यू मोस्ट, एंड देन दैट्स वेयर you get more prone or more open to doing something in your own lives. And that is why I say कि मुझे वीकली कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरी डाला करो, पेश करा करो. So that's the second part which we do. And third part is of course the sharing from the participants जो मेरे को सुन रहे हैं, उनकी कुछ sharing होती है, and then I have a sharing to do. That's what Happy Minds is all about. So do take your hand up, or do let me know that if you want to share, and I would love to share. I would love to hear your sharings. बहुत दिन हो गए तुम में से कुछ लोगों ने sharing नहीं करी है, and मुझे मालूम होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है. Isn't it? I should get a feedback कि इतने HMs अटेंड करते हो, इतना आप लोग सुनते हो, और not only me but you're reading, you're listening to so many people around, you're reading some wonderful books, और आप काम भी कर रहे हो, तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना लाइफ में. तो वो शेयर करना बड़ा जरूरी है. हमें डींगे नहीं हाँकनी है, लेकिन अपनी स्टोरी बताने में भी क्या हर्ज है, राइट? सो would love to hear your stories. तो आज का मैं चालू करता हूँ आज की सक्सेस स्टोरी से. So I have a few success stories with me, and one is from Manoj Nahar, and he sends a lovely note. He says he's from Aurangabad, and he says, "Sir, I'm from a well-settled business family. I'm a second generation entrepreneur. Life was very protective and settled and safe in my life, safe all my life. But last few years, it has been very difficult business-wise, and I've been struggling. 2 months ago, in one of the Happy Minds, you spoke about handling failures. That success in life is not determined by being dealt a good hand. It's determined by taking the hand you were dealt with and utilizing it to the very best of your ability." तो मेरा जो डायलॉग है उसने पूरा लिखा है ऐसा. Thank you Manoj for sharing this. And he says, "Sir, that HM was for me." वैसे तो हर Happy Minds मेरे लिए ही होता है, लेकिन I got that weekly shot
क्या एनर्जी आया सर, उसके बाद माय बॉडी लैंग्वेज चेंज्ड, माय कम्युनिकेशन चेंज्ड, एंड आई एम नॉट आउट ऑफ ट्रबल, बट नाउ आई डोंट फील लाइक अ लूजर। मेरे लिए यही बहुत है। आप मेरे लिए क्या हो ये आपको कैसे बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। So when I read this, I thought this is worth sharing with all of you. See, I also need to get that dose of inspiration when I see some benefit coming out of me sharing whatever I have to share every Saturday with all of you. So Manoj, love you for sharing this, and this statement. When I read this, तो मुझे याद आया कि हाँ उस एचएम में मैंने बात किया था कि कामयाबी is not about you being dealt a good hand. वो तो ताश खेलते हैं ना, तो ताश खेलते हैं तो आई एम नॉट सेइंग यू प्ले कार्ड्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हेन यू प्ले कार्ड्स तो आपके पास एक अच्छा हाथ आया, so you get a sequence or you get a trail. I don't know if some of you who don't play cards, you may not be able to understand this, but then in cards this is the language which they use, that कभी आपके पास अच्छे पत्ते आ जाते हैं तो आप फिर वो बाजी जीत लेते हो। तो सक्सेस इज नॉट अबाउट दैट। सक्सेस इज कि आपके पास जो भी हाथ आया, जो भी आपको हैंड डील किया गया, जो भी आपके पास कार्ड्स आए, क्या आप उसमें से अपनी कामयाबी निकाल सकते हो? व्हाटएवर लिटिल मोर हाई, जो भी कामयाबी निकाल सकते हो। तो गॉड इज ऑल्सो गिविंग अस अ हैंड एवरी डे। हर दिन एक पत्ते की माफिक हमें एक डील हमें हमारे सामने आ रही है कि वो यू गो टू अ कैसीनो एंड देयर इज दिस गाय बिहाइंड, जो दिखाते हैं ना पिक्चरों में, वो पत्ते ऐसे ऐसे बांट रहा होता है। तो ऐसे हर दिन जो है ना पत्ते बढ़ते हैं और हमारा पास हमारा हैंड आता है। तो इट इज नॉट अबाउट दैट वी हैव अ गुड हैंड। सो लॉट ऑफ पीपल प्रे, लॉट ऑफ पीपल से आज का मेरा हाथ अच्छा होना चाहिए, आज का मेरे ये कार्ड्स अच्छे होने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग डोंट प्रे, वो तो है, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट सक्सेस इज। जब हाथ अच्छा आया और तुम बाजी जीत गए तो तुम्हारा क्या रोल था उसमें, राइट? वो तो जब पत्ते कैसे भी आए हैं तुम्हारे पास, तुमने उसको घुमा फिरा के, तुमने उसको अपना काबिलियत लगा के तुमने कहा इसको आई विल मेक इट अ सक्सेस, एंड दैट्स व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो जब मार्केट अच्छा था, बिजनेस ठीक चल रहा था, लोग काम कर रहे थे, कस्टमर्स माल खरीद रहे थे, तो आपका माल बिक रहा था, आपका बिजनेस अच्छा हो रहा था, तो कौन सी बड़ी बात। वो तो बाय चांस आपका एक हाथ अच्छा आपके पास आ गया, बाय चांस योर कार्ड्स वर राइट, राइट? इट्स ओनली व्हेन you do something out of the way, you do something different, in spite of the hand you have been dealt with. That's what success is all about. So ये उस दिन का मेरे को याद आया मैंने I had spoken on this, and for some of you, it may be the first time you're listening on this, and for some of you, you heard me before on this, you forgot about it. Let it be a repetition for all of you. So I'm sure there will be many such Manojas in my life and listening to me in happy minds. कि डोंट वरी अबाउट थिंग्स कि बिजनेस डाउन है, कुछ रिश्ते हिले हुए हैं, कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज, दैट ये तो ऐसा रहेगा रहेगा, और इसी में अगर हम कुछ कर पाए, इसी उतार चढ़ाव में अगर हम लाइफ को अच्छा हैंडल कर पाए, तो फिर बहुत कुछ संभव है ना। सो जस्ट यूज दिस एनालॉजी इन लाइफ कि you're there, in a casino, and that the cards are being given to you, और आप प्रे कर रहे हो कि ये कार्ड्स अच्छे आने चाहिए, ये पत्ते अच्छे आने चाहिए, बट आपकी प्रार्थना is just a prayer from, it's a wish from your side, but your capability is there. You have to trust your capability, you have to build on your capability, you have to make sure that you are able to deal with whatever has been given to you, एंड उसमें से आप कामयाबी निकालो तो मजा है। सो रोने का नहीं, बिल्कुल, राइट? रोने का बिल्कुल नहीं कि ये हो गया, ऐसा हो गया। यू द कार्ड्स व्हिच आर देयर, वो अच्छा ये समझो कि इफ वी से दैट एवरीथिंग इज गॉड्स, एवरीथिंग एवरीवेयर देयर इज गॉड, सो प्रभु सब जगह है, सब चीज प्रभु की है, तो ये जिंदगी जो हमारी ये भी तो प्रभु की है। एंड इफ ही इज गिविंग अस अ डे टू लिव बाय विद ऑल द चैलेंजेस इन दैट डे, तो ये भी तो उसकी मर्जी होगी कि हम उस चीज से गुजरें। उसको भी तो मन में होगा कि यार ये इंसान इस चीज से गुजरेगा तो फिर कुछ बन के निकलेगा ना। तो इट इज ऑल अबाउट द सिचुएशन व्हिच वी हैव बीन गिवन। फर्स्ट हैव दिस फेथ इन यू दैट द सिचुएशन व्हिच इज गिवन टू मी, व्हिच आई एम फेसिंग, इज नॉट टू क्रश मी। द सिचुएशन इज नॉट टू मेरी मतलब ये मुझे खत्म करने के लिए सिचुएशन नहीं है, ये मुझे बर्बाद करने के लिए सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन जो मुझे दी गई है, ये मुझे बनाने के लिए दी गई। This is going to make me better. This is going to make me more fine tuned. This is going to fine tune me. This is going to sharpen me more.
ये मेरा डायमंड की पॉलिशिंग वाला सिचुएशन है, क्योंकि ये सिचुएशन उसने दी है ना। और अगर उसने दी है जिसको हम अ, सब कुछ मानते हैं, तो हमारा वो भला ही चाहेगा ना, हमारा बुरा तो नहीं चाहेगा। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारा भला तुम्हारे हिसाब से हो, ऐसा नहीं होता है। ही इज नॉट योर एट योर बेक एंड कॉल, ही इज नॉट योर रामू, ही इज नॉट योर यू नो स्लेव, कि जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। वो पत्ते बांटेगा अपने हिसाब से, उसको मालूम है किसको कौन सा पत्ता बांटना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने उन पत्तों के साथ हमने क्या डील को आगे कैसे ले जाना है। सो आई थिंक दिस मे बी वन ऑफ द मोस्ट awesome lessons for all of you, for in today's happy minds, that you deal with the hand which you have been dealt with in the best possible way. जब आप अपना बेस्ट लगा देते हो उस दांव को, उस बाजी को जीतने के लिए, चाहे आप जीते नहीं जीते वो अलग बात है, लेकिन आपने अपनी कला लगा दी, आपने अपने आप को उसमें निछावर कर दिया, तो फिर एक बात तो पक्की है, चाहे वो बाजी आप जीते ना जीते, लेकिन आपने खुद पे तो जीत पा ली। यू आर अ बिट बेटर देन व्हाट यू वर बिफोर द हैंड केम टू यू। You are a lot better than what you were when the cards were dealt to you, isn't it? And that's a big victory. कि हम अच्छे बन गए। Is that not good? Problem क्या है कि आपको लगता है कि वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए, and that's where you say I have not won, but you became better. And if you keep on becoming better, better, better like this every day, फिर वो एक दिन बाजी क्यों नहीं आएगी अपने पास? एक दिन वो गेम क्यों नहीं आएगा? और फिर जब ऐसे-ऐसे हम खेलते रहेंगे, जैसे हम रोज अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, रोज अच्छा बना रहे हैं, तो एक दिन अपनी काबिलियत से हम बाजी जीत जाएँगे। और फिर जब अपनी काबिलियत से हम बाजी जीतेंगे ना, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, क्या होगा? जब हम अपनी काबिलियत से अपनी ये बाजी जीतना चालू कर देंगे, फिर एक दिन अपने पत्ते भी अच्छे आएँगे। फिर उस दिन अपने पत्ते भी अच्छे आएँगे। तो काबिलियत से भी जीत रहे हैं और अपनी किस्मत से भी जीत रहे हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चैलेंज क्या है? हमें काबिलियत से ज़्यादा किस्मत पे जीतना है, एंड दैट्स वेयर वी गेट स्टक। So build on a capability, and building on a capability is all about accepting the situation which has been given to you, which is there in front of you, and you accept the situation as His will. ये प्रभु की इच्छा है, हरी इच्छा। जब हरी इच्छा होती है, हम प्रभु को हरि के नाम से बुलाते हैं कि हरि चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, ये प्रभु इच्छा है, that the situation is there, and प्रभु की इच्छा है कि हम उस सिचुएशन से गुजरें, और जब गुजरते हैं तो अच्छे बनते हैं। So hello, you there? So आज एक शेयरिंग से एक शेयरिंग हुई। शेयरिंग फ्रॉम अ शेयरिंग। सो ऑल हस्बैंड्स देयर, प्रभु की इच्छा है वो। सो वो अभी तुम्हारे को डील मिल गई है। नाउ मेक द बेस्ट ऑफ द डील, राइट? ऑल वाइफ्स देयर, अब जैसा भी तुम्हारा आइटम है यार, ठीक है, अभी ऑल वाइफ्स अभी हैंडल कर लो अपना आइटम को यार, क्या करे, जो है उसको ठीक ठाक करके ठोक पीट करके काम चलाओ। हम्म, क्या बोल रहे? Sham says, sir, such a beautiful thought. Thank you for sharing. Love you, Sham. Uday says, faith in yourself. Absolutely. Hmm. Chalo, great. So all husbands and wives, all parents, ensure अब जो तुम्हारा बच्चा है, वो जैसा भी है, the hand which has been dealt to you, now make the most of it. Make the most of it. Hmm. Chalo, this is the first. And do take your hand up if you want to share something. I want to listen to a few voices today. आज मेरी इच्छा कर रही है कि मैं आप में से कुछ लोगों की आवाज सुनूं। और I want to listen to a few in terms of आपकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है। So many of you have, I know what's happening in the lives of a few of you, and there are so many जिनकी लाइव्स के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है। काफी दिनों से बहुत लोग शांत बैठे हैं। इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है, या फिर आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। क्या लिखा है सागर, इतना बड़ा लाइफ में क्या लिखा है तुमने?
I apply your words in my life and that is strong. Plinth in my building. शाबाश, ये तो पूरा typical construction language में घुस गया है. So इसने plinth बना लिया अपना. चलो, good. Love you, Sagar. Love you for sharing this. Love you for sharing. Hmm. चलिए, सेकंड सक्सेस स्टोरी दो. आज I'll share only two क्योंकि इसमें मैंने काफी समय ले लिया. I just share two. This is from Sunil Keshav. MG sir, I am from Jhansi and I have a manufacturing unit. Last Sunday, I organized a lunch for my team. We were 65 people. Once a year, we have our get together where we do it in a hotel, and everybody comes and has lunch. But this year it was different. I had heard you talk on Seva some happy minds back. So we organized lunch in a marriage hall. सब लोगों ने नीचे बैठकर खाना खाया and I and my family served food to all. First time I felt so very connected to every team member. Last many years we have been having a get together. Team would come, have food and go back. They will talk about work and nothing else. But this time everyone said it was memorable. They were so happy to see my family, my children doing seva. And all of them stopped in the end and served my family too food. We all feel so very connected now. इतनी छोटी सी बात से इतना फर्क पड़ सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था. Thank you, sir, for showing the path. And now the whole team watches you on YouTube every Saturday and every Tuesday. अरे वाह. Thank you for sharing this, Sunil. If you will be listening to me and your team, all the best to your team. And wonderful that things are being picked up so beautifully. तो सबसे अच्छी बात क्या लगी सुनील की शेयरिंग की कि he says इतनी छोटी सी बात कि सेवा करना, इतनी छोटी सी बात कि खाना खिलाना can make such a huge difference. And I always feel, believe, I don't know if you remember this session which I took some happy minds back on seva, that whatever work we are doing, whatever we may be working, we may be in business, we may be at home, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अगर हमने सेवा का भाव डाल दिया, that work kind of increases its potential for productivity. कोई भी काम उसमें अगर सेवा का भाव डाल दिया, जैसे मैं भी हैप्पी माइंड्स ले रहा हूं, तो ये एक काम है मेरा कि मैं आई एम एड्रेसिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम शेयरिंग विद यू. उसके पीछे अगर सेवा का भाव है तो इसका पोटेंशियल 10 गुना बढ़ जाता है. मेरी टीम जो है लगी रहती है, आपको मैसेजेस करती है, आपको पोस्ट डालती है, रिमाइंडर भेजती है, मेल्स आते हैं आपको. वो अगर इसके पीछे का सेवा का भाव हटा देना, ये 10 गुना कम इफेक्टिव हो जाएगा. So all my team members were there, who are constantly messaging. मेरी बच्ची है स्नेहल, वो तो बच्चा है, वो लगे, वो उसका तो वही काम है, मुझे लगता है सपने में भी उसको मैसेजिंग आते होंगे. She messages so much. But जब भी मैं मिलता हूँ स्नेहल को ऑफिस में, and she, so मेरा हर सेशन होता है, she will message me before the session, sir, all the best for today's session. And from all the people who are there, who message और जो कहते हैं, but her message is so wonderful that जबकि उसका कोई कनेक्ट नहीं है उस सेशन से, she is handling the back office and she is taking care of things. सेल्स की टीम अलग है, मेरी रिव्यू टीम अलग है, एंड मैं एज अ स्पीकर मैं जा रहा हूँ सेशन में, बट शी विल सेंड अ मैसेज, सर ऑल द बेस्ट फॉर टुडे सेशन. तो वो सेवा का भाव इतना स्ट्रांग है कि सर आई वांट टू डू सेवा टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. तो लोग जानते नहीं है उसको, लोगों ने शायद उसको शक्ल नहीं देखी उसकी, शी इज नॉट ऑन द फ्रंट साइड, बट the approach is so wonderful, and that adds on to the work which she does. That takes away the tiredness, वो काम की थकान निकाल देती, बिकॉज उसके पीछे का भाव सेवा का है. तो जो भी आप काम कर रहे हो, मेरा ये आपसे कहना होगा कि उसके पीछे एक सेवा का भाव. और ये I will not go deeper into the session because I have already taken this subject a few weeks back. So you can see it on whatever social media channels, अगर वहाँ होगा वीडियो तो मेरा देख लीजिए आप. But just want to remind you all, and you will see the difference कि आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं आपके आसपास में या मे बी घर में भी जो काम कर रहे हैं, आपकी मेड्स आती हैं काम करने के लिए, जिसके अंदर सेवा का भाव है उसके काम करने का तरीका अलग होगा. काम वही है, काम वही झाड़ू लगाना है, काम वही है बर्तन धोने का, लेकिन सेवा का भाव है तो उसके काम में अलग ही एक फिनिश आएगा, अलग ही एक क्वालिटी आएगी, अलग ही एक भाव आएगा. सेम इज इन द ऑफिस. काम तो वही है, चाहे वो अकाउंट्स हो, सेल्स हो, ऑपरेशंस का काम हो, जो भी काम होगा, बट इसके पीछे अगर सेवा का भाव है, that I want to serve somebody, this work is going to benefit somebody, अगर वो भाव आ जाता है तो उस काम की पोटेंशियल
10 गुना बढ़ जाती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, राइट? एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सब पीपल अराउंड मी। मेरी टीम जो है, they come with a सेवा भाव, so when they go on the field, they are there with a सेवा भाव कि can we serve more people, can we help more people, can we make more people become what they can become, and that is so wonderful to have people around like that. So that's what this sharing was from Sunil, that sir, छोटा सा काम, छोटी सी बात है, and I want you all to also understand कि कभी भी डिफरेंस जो है ना बड़ी बातों से नहीं आता, डिफरेंस जो है ना छोटी बातों से आता है। सो इट्स अ स्मॉल थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस। सो कभी भी छोटी बात को छोटा मत रहने दो, छोटी बात से बड़ा डिफरेंस होता है, ये अगर आपने पकड़ लिया, यू वुड बी एबल टू रियली पिक अप स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू मेक योर लाइफ सो बेटर। तो आप दाल खाते हो ना या सब्जी खाते हो, तो दाल बनती है इतनी बड़ी कुकर के अंदर, लेकिन उसमें छोटा सा जो रोल होता है वो नमक का होता है। द स्मॉल क्वांटिटी इज salt, but that small quantity makes a big difference, makes a big difference, right? चाय वो इतनी क्वांटिटी की चाय होती है, उसमें छोटी क्वांटिटी कंपेयर टू दैट चाय की क्वांटिटी, द शुगर क्वांटिटी इज सो स्मॉल, बट दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, isn't it? So when you meet people, when you greet people, or when you go home in the evening, right? तो पूरा दिन है और आप शाम को घर गए, that small smile on your face when you enter the home can make all the difference, right? That small little hug to your family can make all the difference. It's not that you have to keep on hugging for an hour. I'm talking about your wife. That you don't hug for an hour. It's just a hug for a few seconds, but that can make a big difference. That smile is just a smile for those few seconds, but it can make all the difference. Am I right or not? तो छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। And you're sitting in an office, and then you just send a message to your uh, wife or to your husband, just love you, or maybe just thinking about you. A small thing, it can make a huge difference to the entire relationship. Hmm? And when you go home in the night, maybe and then your wife will say, ये किसको भेजा था मैसेज, बताओ, गलती से मुझे आ गया क्या? So that's on the humor side, on the joke side. But I'm sure when she reads a message from you, that just thinking about you, yeah, you're having your lunch, उसने टिफिन बना के तुम्हें भेजा है, तुम टिफिन खा रहे हो ऑफिस में, and तुमने एक निवाला लिया मुंह में, and you just type a message and send her, अरे क्या बढ़िया सब्जी बनाई है, love you. A small thing, and it can make a huge difference. कल शायद वो टिफिन को बनाने में उसका दिल और लगेगा. It's just a small, these are small things. And चक्कर क्या है ना, हम बड़े के चक्कर में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, उसके चक्कर में छोटी छोटी चीजें हम लोग भूल जा रहे हैं. It's a small thing. If it's a get together, you having food, but आपने उस हल्के से एक ट्विस्ट लेके आ गए, आपने इसको ट्वीक कर दिया, and see how it is. हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ी आज की बातें? Oh yes, small things make life very happy होते हैं. हाँ भी हो, सब लोग आज आज विराम लेके बैठे हो कहीं. Hmm. Small things make a big difference. So your small sharing can also make a huge difference. Hmm. तो ये जो वीकली शॉट्स लेते हो, मैं तुम्हें बार बार प्रॉड कर रहा हूँ, बार बार तुम लोग को इंस्टिगेट कर रहा हूँ. हम तो रोज आपके पल्ले पड़े पढ़ना चाहते हैं. हाँ, बस यही करो तुम, अभी मेरे पल्ले पड़ जाओ. पिछले जन्म का कुछ उधार लिया था लग रहा है मैंने, जो अभी चुका रहा हूं मैं. You're deep into it. अरे वाह, चलो गुड, लवली, ग्रेट. सो मेरा आपको, मैं हर एचएम में मैं प्रॉड करता हूँ. आई काइंड ऑफ पिंच यू, आई काइंड ऑफ पुश यू, आई काइंड ऑफ the wrong word is I keep on I will not use this word. It's a family program. तो मेरा आपको prod करने का, आपको push करने का एक ही कारण है कि I'm asking you to share. I'm asking you to share something. The reason is one, because
थ्रू दिस शेयरिंग और थ्रू दिस प्रोडिंग ऑफ माइंड आई एम फोर्सिंग यू टू एक्ट। क्योंकि जब आपने कुछ किया होता है ना, तो शेयरिंग की बड़ी इच्छा होती है। आपने कुछ अचीवमेंट किया होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, यू वुड वांट टू टेल द वर्ल्ड अबाउट इट। एंड व्हाट कुड बी अ बेटर प्लेस, अ बिगर प्लेस देन हैप्पी माइंड्स टू कम एंड शेयर अबाउट व्हाट यू हैव डन। और don't let your limitation of speaking and shyness and hesitation take that sharing away. तो मेरा आपको पुश करना कि आप शेयर करो is just to make you push yourself in life that let me do something to share. मैं कुछ तो करूं। इतने हफ्ते हफ्ते मैं एचएम सुन रहा हूं, इतने हफ्ते हफ्ते मैं वीकली शॉट्स ले रहा हूं, इतने हफ्ते हफ्ते मैं ज्ञान ले रहा हूं। तो मेरे पास ज्ञान का भंडार है। अभी मैं शटर खोलूंगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। इतना इतना ज्ञान ले लिया, लेकिन क्या मेरी लाइफ अच्छी हुई? Have I become a bit better? And if you have not become a bit better, then ये तो चिंता का विषय है। इसमें तो गंभीरता से सोचना चाहिए कि इतना सब सुनने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं किसी चीज में, कहीं संकोच में अटक रहे हैं। सो दैट ऑल्सो शुड बी डेल्ट विद। सो यू बिकमिंग somebody is important, and when you become somebody, sharing that becoming becomes a source of inspiration for so many around. So I feel that if you're taking a weekly dose, ये बनना आपका बड़ा जरूरी है। So I want a few hands raised today to share with me what have you become. तो मैं वो देखना चाहता हूँ। तो अब तुम लोग मुझे भी क्या टाइप करके ये प्यार मोहब्बत की बातें लिख रहे हो सर? So it is your it is your love to force us to act better. Absolutely. तो मेरा प्यार तो है ही। तुम्हारा प्यार तुम्हारे प्रति कितना है, ये मुझे देखना है। And absolutely right, Vivek. Implementation is the key. Nothing happens. Nothing happens till we act. Nothing happens. Right? ये दो लोग मोहब्बत करते हैं सिर्फ विचारों में, थोड़ा ना उससे परिवार बनता है। Nothing happens. Right? परिवार आगे बढ़ता है जब हस्बैंड वाइफ जो है सिर्फ बातें नहीं करते हैं, सिर्फ विचारों में आदान प्रदान नहीं करते हैं, दे एक्चुअली एक्ट, देन एक फैमिली होती है। And I would want to go deeper into that explanation. So nothing happens till you implement, right? Implementation is a must. So I want you to implement things. तो आप देखो ना, आप अटक रहे हो, इतना आप कंज्यूम करते हो, इतना कंज्यूम करते हो, तो लाइफ कहीं अच्छी नहीं हो रही है। लाइफ में कहाँ अटक रहे हो? इसका मतलब हम वही कर रहे हैं जो हम करते आए। I was asked this question that sir, गोल्स लिखते हैं लेकिन गोल्स पूरे नहीं होते। तो अरे पूरे कैसे होंगे? The question is, do you really want those goals? Right? And second is, by the way you are living your life, the way you are living your life right now. और मेरा क्वेश्चन ये आप लोगों से भी है कि आपने जो भी गोल्स लिखे या आपके पास जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, तो आपने पूछना है रोज अपने आप से, रोज पूछना है, क्या मैं जिस ढंग से जिंदगी जी रहा हूं, क्या ये तरीका मुझे मेरे गोल्स की ओर लेके जा रहा है? I meet entrepreneurs and सर हमें ये अचीव करना है, हमें ऐसा बिजनेस, हमें इतना टर्नओवर चाहिए। अग्रीड। हमें ऐसा ऐसा तरीके से बिजनेस करना है। अग्रीड। बट जिस ढंग से आप बिजनेस कर रहे हो, क्या ये तरीका आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा? एंड आंसर इज नो। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देन व्हाट द हेल आर यू डूइंग अबाउट इट? तो क्यों नहीं उसको अपने तरीके को चेंज कर रहे हो? कि अगर आपको वेट कम करना है अपना, या आपको अपने हेल्थ को अच्छा करना है, तो वे यू आर लिविंग योर लाइफ, इज दैट द राइट वे? क्योंकि अगर राइट वे होता तो अभी तक हेल्थ ठीक हो जाती, अगर राइट वे होता तो अभी तक बिजनेस का टर्नओवर हो जाता। इसका मतलब कुछ तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं ना। और जो वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं? दैट्स वेयर वहीं गाड़ी अटक जाती। तो मेरा आपसे ये कहना है कि all these weekly shots are there, but these weekly shots come with a responsibility, and responsibilities can really make our lives a lot better. So आज की मैंने आपको दो बड़ी simple, there are many things which I gave to you, but if you take back this entire nichode, so there are already I've already given you 3-4 weekly shots from the time I have started the Happy Minds for today. Let me see if you can recollect. चलो आज के Happy Minds में बताओ मुझे तुमने क्या क्या insights पकड़े। Let me see if you have just been listening or you have been listening to me very attentively. Chalo, I feel I have given you more than 10 insights today. Let me see how many you have been able to pick up. जिसने पहले ही 5 बता दी मुझे, उसको एक चुम्मा पक्का।
Deal with whatever is in your hand. ठीक है, wonderful is करा. सेवा दो, राजेंद्र का सेवा आया. Whatever situation comes, we have to deal with it with the best of our ability. Not deal with it. We have to deal with it with the best of our ability at that moment. Except your spouses they are. ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत important है ये, अंजलि. Small things make a huge difference. Absolutely, Pradeep. Small things make a big difference. और जिसको ये समझ नहीं आता ना कि छोटी चीजें बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं, कभी एक रात तो सो किसी मच्छर के साथ. You will understand. एक मच्छर तुम्हें कितना तंग कर सकता है. वो नाना पाटेकर का डायलॉग याद है? तो एक मच्छर, तो स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. पूरी रात हराम कर सकता है एक मच्छर एक कमरे में तुम्हारे आ गया. Dana, absolutely right. Actions are required for results. Absolutely, Kamlesh. There is no substitute to that. Sanskar and values. Oh yeah, I love you for this, Abhijit. That no matter how far you want to go ahead, if you don't have sanskars, nothing will happen. Choti baat can bring big difference. So smile and hug daily. Oh yes, good actionable, Vivek. Pick up a smile, pick up a hug. संतोष ने तो ऐसा नंबर 1 लिखा है पहले. लाइफ पुट अस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वी हैव टू डील. लाइफ ये भगवान का प्रसाद है. जितनी भी डिफिकल्टीज तुम्हारी लाइफ में है, ये उसका प्रसाद है. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें साला चाहिए मीठा प्रसाद. तुम्हें चाहिए प्रसाद तुम्हारे स्वाद का. तुम्हारे एक प्रसाद की तुम्हारे मन में एक डेफिनेशन है कि जब हम जाएंगे प्रसाद, तो प्रसाद जो है मीठा मिलेगा, हलवा मिलेगा, शिरा मिलेगा, लड्डू मिलेंगे. तुम्हारा मन में यही डेफिनेशन है प्रसाद की. तुम्हें समझ नहीं आता कि उसका प्रसाद तो ये मंदिर का प्रसाद है, ये इंसानों का प्रसाद है. उसका प्रसाद जो है वो किसी भी रूप में आता है. और सबसे बढ़िया उसका प्रसाद अगर है तो वो चैलेंजेस का रूप का प्रसाद है. सो व्हेनेवर अ चैलेंज कम्स इन, ऐसा हाथ जोड़ना, नमन करना, बोलना भगवान धन्यवाद इस प्रसाद का. तो देखो क्या से क्या हो सकता है. द अप्रोच टू इट विल चेंज फिनोमिनली. अप्रोच, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल एनी सिचुएशन. स्मॉल लव, सीडीसी एंड डीसीडीसी. ये तो मैंने लास्ट वीक बताया था नवनाथ. डीसीडीसी मॉडल, that the DCDC model to success was last week's HM, but happy that you remember it. किस्मत से ज्यादा मेहनत पे ध्यान दो. और आज के भजन का तो वही सार था ना. आज के भजन में हमने क्या बात करी थी, क्या सुना था? Today's भजन was all about more than a श्रद्धा. He will, what महादेव wants from us. भोले को क्या चाहिए हमसे? भोले को हमसे हमारे कर्म चाहिए. भोले को हमसे हमारे गुण चाहिए, गुणगान नहीं चाहिए. उसको उसकी क्या तुम तारीफ करोगे, उसके क्या गुण गाओगे? वो सब त्याग के बैठा है ना. जो त्याग के बैठा है उसके अब क्या गुण गाओगे? उसको क्या दोगे? उसको क्या फूल, क्या मिठाई, क्या उसको दोगे? तो वो तुम्हारे मोर देन योर भक्ति, व्हाट महादेव वांट्स इज तुम्हारे अंदर के गुण क्या है, तुम्हारे कर्म क्या है, तुम क्या धर्म फॉलो कर रहे हो. तुम्हारा धर्म है, एज अ फादर यू हैव अ धर्म, एज अ वाइफ यू हैव अ धर्म, एज अ हस्बैंड यू हैव अ धर्म, as a son you have a child, you have a dharma, as an entrepreneur you have a dharma, as a citizen you have a dharma. हम सबका धर्म है. राइटसनेस उस रोल का एक धर्म है. तो क्या हम वो धर्म निभा रहे हैं? दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. Oh, make most of whatever you have. Absolutely. Sir, implementation will make the difference. बहुत ज्ञान की तुमने बात करी है कौशिक. मेरे आज नयन खुल गए, चक्षु खुल गए, मेरे आंखें खुल गई कि इम्प्लीमेंटेशन मेक्स ऑल द डिफरेंस. व्यंग कस रहा हूं मैं, because I don't see many making any actions on that, on whatever they're picking up. अनुजा ने पूरा एकदम पूरा हैप्पी माइंड्स को सिनॉप्सिस में बदल दिया है, सारे पॉइंट्स. No, don't believe in God. Feel God. Don't believe. Belief is something which is you believe in something which is not there. No. God is there. So let's not believe in God. Let's feel God. The more you feel God, the more you feel her presence around you in whatever form. That feeling of the presence is if I were to ask you, do you believe your parents
are there, or do you know your parents are there? Do you believe your children are there, or do you know your children are there? You know, right? You don't believe, you know. In the same way, you know God is there. So you feel, the moment you feel God's presence, ये कभी subject है, कभी my life में आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, I'll take you deeper into it. In fact, let me just share this. My life is there. Next month, we are all excited to go for my life. अभी भी कुछ लोग के आने की possibility है, तो आ जाओ मेरे साथ. If you really want to be there with me for a few days, no mobiles, no watches, just me and you in the most beautiful place in Uttarakhand. And ये मेरी picture पहली की है. So this is a picture of last year's my life, and we had an awesome time, and I'm looking forward to some wonderful moments with a group of seekers who are all going to Uttarakhand with me. तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ समय बिताना चाहिए मेरे साथ, अगर हैप्पी माइंड्स में आ रहे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब अच्छा लगता है तभी आ रहे हो ना. Take it to a next level. Take it to another. Sitting with me in a structured way, being there with me for days, from morning till God knows what time in the night, and going through the entire journey of making your seeker in you alive. So I was sharing with one of the Chrysalians yesterday night. I sent a message कि जब भी life में confusion होता है, the seeker in us has to be of the highest level. And when a seeker in us is of the highest level, सामने रास्ते खुलने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं. Not that कि वो रास्ते थे नहीं, not that कि वो रास्ते हमारे वजह से बन गए, हमें दिखने लग गए. And because a seeker is always curious about things, a seeker is always seeking out ways. तो जब आप सीकर होते हो तो एक क्लैरिटी आती है लाइफ की. तो बहुत से लोगों की ना लाइफ में क्लैरिटी नहीं है. So I sent a message across yesterday that if you keep your seeker to the highest level, clarity will come. And that's what has happened to many who are there with me in my life every year. They come, they have that my life moment there. They have that clarity for the moment there. And that clarity takes them leaps and bounds ahead. And that's why they repeat many times. There's so many who repeat every year my life, because that clarity took them to a certain level. Now they need one more clarity. Now they need one more jump in their lives. And once they're there, the seeker in them makes them see what is in front so very clearly कि life उनको next level पे ले जाती है. And of course, it's a cleansing process every year. So if you want to be a part of it, which I strongly suggest, कोई और program करो ना करो मेरे साथ. ये program, business programs are different programs. वो पैसा कमाना है नहीं कमाना है तुम्हारे ऊपर है, business अच्छा करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, but life तो अच्छी जी के जाओ यार. Then I feel that you should be a part of it. Every Saturday we will be better to help you, sir. Small things, okay. Difficult situations, whatever is given. So I feel that all of you have kind of summed it up. Okay. Any question you have, you would like to ask me? कोई question है, मुझे नहीं मालूम मेरे पास उसका जवाब होगा कि नहीं होगा, but if you have a question, you can just type in a question for me to share, and maybe I'll see if I can, to the best of my ability. आपका question मेरे लिए प्रसाद होगा. उसको मैं ग्रहण करूंगा और आगे बढ़ूंगा. Isn't it amazing analogy that whatever challenging situation you have in front, right, is just like a prasad. तो आप मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में आप जब दर्शन करते हो उसके बाद आपको प्रसाद मिलता है in whatever form. कभी जल के रूप में मिलता है, कभी मिश्री के रूप में मिलता है, कभी एक्चुअल प्रसाद के रूप में मिलता है. तो ये जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, ये तो उसका घर है ना, तो ये भी तो मंदिर ही है. तो everything which we receive, which we face, which we get is nothing else but a प्रसाद. तो अगर आपका कस्टमर नाराज है तो वो प्रसाद है ना. उसको ग्रहण करो, और उस प्रसाद को ग्रहण जब करोगे तो you will see that a lot of things will happen in terms of you becoming a lot better. हाँ जी, एक क्वेश्चन आया है, difference between mindfulness and blissfulness. Okay. See, in the shortest possible, if you were to understand mindfulness, what is mindfulness and what is blissfulness?
माइंडलेसनेस क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा. तो माइंडलेसनेस मींस योर माइंड वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट. सो यू हैव अ लॉट ऑफ, बचपन में हम लोग नहीं सुनते थे एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर एंड सो द दिस मींस वो प्रोफेसर जो है या वो डॉक्टर है या वो साइंटिस्ट है एंड ही इज एब्सेंट माइंडेड. तो वो अगर वो डॉक्टर है या साइंटिस्ट है या प्रोफेसर है, इसका मतलब क्या है? एजुकेटेड है ना, इंटेलिजेंट है, बट वी उसको रेफर किया है एज अ एब्सेंट माइंडेड. मींस उस समय उसका माइंड एब्सेंट था, माइंडलेस. तो कुछ लोग जो होते हैं जब काम करते हैं, so they are so involved in that work, in certain work, that they become mindless in certain other areas. तो काम में इतना मगन है. उसकी वाइफ ने अगर उसको बोला कि शाम को घर आओगे तो from the market you get so and so stuff, but he comes home and say, oh shit, I forgot about it. तो he was, जब वो लिस्ट बता रही थी काम की कि भाई ये काम कर लो, he was mindless, मतलब माइंड था ही नहीं उस चीज में. So this is called mindlessness. Your mind is not there while that event is happening. And a lot of people are living their lives mindlessly in the present, because the mind is either in the future or mind is either there in the past. In the same way, if you would understand mindfulness means you are into it. Your mind is fully into it. You're able to capture things. Your entire senses are capturing all that which it can capture to give your mind the best data. So you're mindful. Your mind is full of the data which it can collect, the sensation which can capture, and that's where the peak productivity happens. So that is what mindfulness is. Blissfulness. Now, blissfulness is when the entire state of being is ek anand bolte na, there is be the shortest possible time. How do the subject needs to be built up. So there is a joy particle which was discovered by the scientists some years back, जो हमारे कल्चर में एक बोलते हैं ना आनंद का एक मोमेंट आता है. तो जब हम आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं, that's a time when we feel blissful. And meditation is one beautiful way by which you experience the blissfulness. So blissfulness is beyond joy. So if you would understand the entire sequence of things, so there is pleasure which is there. The pleasure is of the body. Then there is the happiness. The happiness is of the mind. Joyfulness is of the emotions, and blissfulness is one of a meditative mind. So a lot of people have not reached this state of blissfulness. Majority of the people are in this state of pleasure कि वो अपने बॉडी को सेटिस्फाई करते हैं, and that is nothing else but pleasure. तो बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस जो है प्लेजर के ऊपर नहीं गया है, कुछ का हैप्पीनेस पे गया है. when the mind is in a state of acceptance, you are happy. कुछ का और ऊपर गया है when emotionally they are in a state where everything is joy, the work is joy, situations are joyful. But very few have actually reached that आनंद में जो समय होता है, आनंद का जो एक aspect होता है, which we call as blissfulness. So your system is capable of being mindless, your system is capable of being mindful, and your system is capable of being blissful. So bliss का मतलब क्या है? Where you are kind of stoned मतलब zoned out. You're in that state of bliss. Nothing will affect you. Nothing will affect you. You're in that state where that's why bliss ko explain karna is so difficult. It is just to be experienced. Happiness can be explained. Pleasure can be explained. Joyfulness can be explained. But bliss is to be experienced. So mindfulness क्या है? जब आपका mind पूरा full control में होता है, full aware होता है, full processing में होता है. You're mindful, you're very watchful, you're very, आपका clarity होती है. That's what mindfulness is. When you're consciously at the highest peak. And blissfulness is where nothing else matters, and you're in that state of bliss. If you come for my life, Dana, I'll take you deeper into this concept of blissfulness. Anji, ओहो, तुम लोग अभी ना मेरे ये is materialistic success everything in today's life, or it depends on everyone's approach? Okay.
Mm-hmm. So Vishali is asking, oh, Vurushali, so not Vishali. Vurushali is asking, is materialistic success everything in today's life? In whose life? My question to you would be, in whose life? If you're talking about, if the question is, should I be chasing materialistic success? Is it everything? Should I think of it as everything? I feel that my answer would be that you would be missing a lot if you only chase materialistic things. I'll just give you one thing which you can think about, Rushali. I have been reading a lot. I've been meeting a lot. I've been watching a lot. I have never come across, और मेरी बात को ध्यान से सुनना. Everybody, listen to me. I have never come across anybody who, at the time of, I've never heard about anybody, I've never read about anybody who on his deathbed, कि वो अभी बस जिंदगी से जाने वाले हैं, on their deathbed, they have expressed, they have desired more of office time, they've desired more of money, they've desired more of wealth, they've desired more of the materialistic pleasures. I have never come across anybody saying it. I wish I had a bigger business. I wish I had a bigger house. I wish I had a bigger car. On their deathbed, nobody desired this. But I have heard, I have read, I have watched people saying, I wish I had given more time to my family. I wish I had lived a lot more. I wish I had understood people a lot more. I wish I had seen the world a lot more. I wish I had experienced life a lot more. ये मैंने देखा है, ये मैंने सुना है, ये मैंने पढ़ा है. तो मुझे लगता है कि जब इंसान जिंदगी छोड़ने के कगार पे आता है तो वो झूठ नहीं बोलता है. तो फिर लाइफ का सत्य तो यही है कि all that matters to us finally is our life, the way we live our life. And our life is, materialistic life is a part of that life. It is not everything. मेरा इतना आंसर तुम्हें होगा. Is that connecting? Rushali? Shilpa says, how do I get? Rushali, was that making sense to you? And the questions are not for the ones who are asking the questions. The answers are for everybody. So maximize on whatever I've been sharing with you. So the last one for today. अरे बात बहुत सारे questions आ गए. इतने सारे questions तो अभी मैं आज नहीं answer कर पाऊंगा. So I'll just answer the last one, and then those of you who have asked me questions, hold on to these questions. Santosh ka, Umakant ka. What's the importance of gratitude? एक session लेना पड़ेगा. Umakant gratitude पे. How do you know, sir, my customer is not happy? वो तुमसे माल खरीदना बंद कर देगा. ये बिजनेस के क्वेश्चन पूछने का नहीं मेरे से. बिजनेस के क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे बिजनेस प्रोग्राम में आके मुझे पैसा देने का, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछने का. ठीक है, तुम अपना मेरे से आंसर लेके तुम अपना पैसा कमाओगे, अपना बिजनेस अच्छा करोगे और मुझे पैसा नहीं दोगे, मैं नहीं कमाऊंगा. ये कैसे चलेगा? ये नाइंसाफी है संतोष, बिल्कुल नहीं चलेगा. तुम पैसा कमाओगे तो फिर मैं पहले पैसा कमाना चाहिए मैंने. ये मैं कभी और आंसर करूंगा. You come for my business program or any other business session which is there. I would love to keep happy minds to purely on life based subjects. ठीक है. So how do you get clarity when mind is always cluttered? How do you get clarity? Mind is cluttered because of the kind of involvements we have, Shilpa, throughout the day. So we keep on doing multiple things. We are bombarded with so many things, चाहे वो family front हो, business front हो, relationship front हो. So बहुत सारा bombardment होता है. So उसके दो तीन तरीके हैं to declutter yourself. And one is the outside approach. Second is the inside approach. The outside approach is you write down your things. So writing down is a beautiful way. बहुत बढ़िया तरीका है to declutter your mind.
making your priorities, making your list of things to do. जब आप लिखते हो तो बहुत सारा जो है ना एकदम ऐसा पेपर में आ जाता है. तो this is an outside approach, and there are many other tools which you can use. The inside way is by giving yourself some time. So give yourself time in 2-3 ways. One is the way of meditation. Sit and just relax your mind. Another way is listening to something which makes sense to you, maybe music to you. Maybe listen to some music. Give yourself some time. Third, give yourself some time for a walk. Go out somewhere alone. Be alone for some time. Maybe a long walk can sort things out. Right? Just walk for 1 hour, and you will see that a lot of things will sort out. I think this is one thing which I've practiced for long. Whenever I have a lot of things coming in my mind, I go for a walk, and I come back a lot more sorted. Right? And the fourth is you talk to somebody, and you have somebody you don't want to get answers from somebody. You don't want some solutions from somebody, but by talking to somebody, kind of decluttering happens. वो गुत्थियां सुलझ जाती है. So you would do any of these 4 or 5 things which I've shared with you, and I'm sure things will become better. ठीक है. So सब हंस रहे. कड़क आंसर बोल रहा सर, आपने बिल्कुल कड़क आंसर दिया. अब क्या करूं मैं भाई, अपना भी तो ऑफिस चलाना है. हमने बिजनेस करना नहीं करना है कि तो बिजनेस होना चाहिए ना. ये क्या मतलब है कि हमारी दुकान चलती रहे सर, आपकी ना चले? ऐसा नहीं होना चाहिए. भगवान सबकी दुकान चलाए, सबको पैसा कमाने का मौका मिले, सबकी जिंदगी अच्छी हो, सबका भला हो, ऐसे ही होना चाहिए ना. सो आई फील दैट, एंड मेरे लिए तो बड़ा थिन लाइन होता है यार. मैं तो बड़ा आई हैव टू वॉक on a thin line, because I also have I also want to run my business in a beautiful way, and I also want to serve in the best possible way. So it's a thin line. वो लाइन कभी क्रॉस हो जाती है, कभी नहीं होती. कभी ज्यादा कड़क हो जाता हूँ, कभी मैं ज्यादा दानवीर हो जाता हूँ. मेरी टीम बोलती है सर सब कुछ फ्री में दे दोगे तो फिर कब पैसा कमाएंगे. कभी मैं कड़क हो जाता हूँ, लोग कहते हैं देखो ये पैसा मांग रहे हैं. बड़ा मुश्किल है यार सिचुएशन. लाइफ ऐसी है, अभी क्या करे. तो कुछ को लगता है यार सर अभी पैसा मांग ले, कमर्शियल हो गए सर, बड़े कमर्शियल हो गए, पैसा मांग रहे हैं. तो तुम अपना बिजनेस फ्री में कर लो ना. तुम क्यों नहीं करते हो फ्री में बिजनेस अपना? तो यह ऐसा होता है. तो इट्स ओके, कभी इसमें भी बात करेंगे. चलो, आज का एचएम, आई एम श्योर लॉट ऑफ इनसाइट्स फॉर ऑल ऑफ यू. एंड हमारा एक इवेंट हो रहा है इस हफ्ते. वी हैव टीम हम हैपनिंग. Almost around 3,000 people will be in the hall. Imagine 3,000 log hall mein, and I'm just ready to go and address them. It's the biggest event for teams. It's the biggest event for team bonding, team inspiration in the country. And बहुत सारे entrepreneurs with their teams are there. They're going to be in the hall with me. It's going to be one awesome, super awesome day on 27th of July. बहुत से लोग आप में से आ रहे हो. Look forward to it. And those of you who really want to come, सस्ते में आना है ना, अगर अपनी टीम को लेके इंस्पायर करना है, तो I think we still have our, I think 200-300 सीट्स हमारे पास अभी भी हैं. We have around, the capacity is 3,000 people. I think 200-300 सीट्स अभी हमारे आजकल में सब खत्म हो जाएंगी सीट्स हमारी, पक्का है. So if you really want to grab the opportunity to come with your teams, come with your team. They will be inspired like never before. They would be just on the edge of the seats in that program. तो उनको लेके आ जाओ अगर उनको टीम को इंस्पायर करना है, and to give them a direction in life, तो उनको लेके आ जाओ, अच्छा रहेगा. And I'll see you next HM. मिलता हूँ आपको after doing this wonderful team हम program, the biggest in the country. And क्या excitement है, अलग अलग लोगों का ना. कोई हॉल मैनेज कर रहा है, कोई वेलकमिंग का पार्ट हैंडल कर रहा है, कोई एंकरिंग का पार्ट हैंडल कर रहा है, कोई टीम एक डांस का प्रोग्राम कर रही है. स्लोगन्स हो रहे हैं, चीयरिंग्स होंगी, टी शर्ट्स बना रहे हैं, उसमें स्पेशल लिखा हुआ आ रहा है. कोई लोग मास्क पहन के आना चाहते हैं. गॉड नोस क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. इट्स काइंड ऑफ अ बिग हंगामा हैपनिंग on 27. And that's why I call it the biggest event in the country for teams. क्योंकि entrepreneurs के लिए बड़े programs होते हैं, individuals के लिए बड़े program होते हैं, लेकिन ऐसे teams को लेके और ऐसे बहुत सारे hundreds of organizations की जो teams आती हैं, तो अलग ही level का एक हंगामा होता है. So this is season 6 for it. पहले 5 seasons हो चुके हैं team हम के. This is season 6. So I'm looking forward to it for this year. चलो मिलते हैं next HM, and some of you I'll see in टीम हम, आप लोग को वहां मिलूंगा.
ठीक है, love you all, make a great life, have some actionables done, some implementations done, कुछ stories सुनाओ, कहानियां सुनाओ मुझे next week, and I'll take in a few more questions when we meet next week. Okay, जी, love you and